COVID-19 pandemic and lockdown has brought about a sense of fear and anxiety around the globe. Throughout the world, an essential modus of prevention from COVID-19 infection has been isolation and social distancing strategies to protect from the risk of infection. In this backdrop, one of the principal measures taken during lockdown has been closure of schools, educational institutes, and activity areas. These inexorable circumstances, which are beyond normal experience, lead to stress, anxiety, and a feeling of helplessness in all, especially in children. A very good evening. Today, I, Koral Gupta, on behalf of Bal Bhavan International School, extend a warm welcome to all on this BBIS talk show. So, today, we will be talking about how to safeguard the children from emotional distress during pandemic. There is a need to ameliorate children and adolescents. For the same, today we have with us Commander Jagmohan S. Bhogal, retired. He is a veteran Indian naval officer with extensive experience of training and education within and outside Indian Navy. He is a B.Tech in electrical engineering and a postgraduate from Cranfield University, UK. He has served for 22 years in the Indian Navy as an electrical officer. His corporate experience includes quality head in avionics industry. He has pioneered many objects in the field of quality in education and skill development as Senior Director of Quality Council of India. He also headed Pradhan Mantri Yuva Yojana, a flagship scheme of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. He is an entrepreneur and an emotional intelligence trainer with a commitment to create positive mindset amongst the youth of the nation. Welcome, sir. We welcome you on this show. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thanks a lot for having me here on this talk show, and it's really my pleasure. And I would also like to thank Bal Bhavan International School for giving me this opportunity to be in front of the parents, then the esteemed group of BBIS, and share my thoughts. Thank you so much. All right, sir. So now, sir, we have come to know, even World Health Organization also says that India is leading in teenage depression, and 1 in 4 children in India from the age group 13 to 15, they are suffering from the same. So, sir, we have also heard from the medical professionals and psychologists that this pandemic is affecting the children, emotionally. They are affected. So, is it a short term effect and will go away with time, or it has a long term effect also? Okay, thank you. Thank you very much, ma'am, for this wonderful question. And really, in fact, you have touched the chord based on which I started this program. I have been doing these programs on emotional intelligence with the corporates, with the universities and colleges. And I realized that during the pandemic, a lot is being talked about medical health, the precautions that are required, and even as you rightly put it out, that even the mental health is being talked about. But there are a few things that probably parents need to understand. That while we are all under pressures, yes, there are pressures of medical issues that are going on in the families. There are pressures on the businesses. There are pressures on the jobs. So, with all these pressures around us, there is a likelihood that we end up transferring that stress onto our children. And I really saw that happening. And that's why I started this program through various schools to reach out to the parents and take this message to them that yes,
We are under stress at this point of time, but being responsible parents, it's important for us to make sure that we don't end up transferring that distress to our children, because they already have a very varied kind of scenario around them. The social distancing is there, they are not able to go out to play. In any case, they are not going to the classroom, so there is no social interaction. Most of the time they are glued to the screens, be it for the classrooms in the morning hours, or afterwards for their entertainment part, or playing games, or watching some serials or movies. So a lot of connection between children and the blue screen is happening at this point of time, and that itself is a big reason for increase in the stress levels. So it's very important, and the question that you have brought out is very, very pertinent, because an answer to that is yes. Uh, we don't realize this, but the fact is that in the formative years, let's say between 1 year to 8 years of age group, children form up their perception and their mindset. And when they're doing this, if the mindset is created based on the current scenario that is available in the environment around them, there is every likelihood that they are going to carry this forward for a much longer time, and it may not remain a short term impact. In fact, it may so happen for some children, not may not be for all the children, but for some children, it can have highly detrimental impact on their health mindset as they move forward in their life. So let's try and understand this with a small example. So let's say there is a potter, and he's got a clay in his hand, and he uses that clay to make different vessels out of it. Let's say he's making four vessels. One is a diya which he prepared, one is a tumbler that he made, a glass or a jug, or a matka, or a pot. Now once that vessel has taken shape, thereafter, when you put water in a jug, it will take the shape of jug. When you put water in pot, it will take the shape of pot. When you put water in a tumbler, it will take the shape of tumbler. Now, if that vessel is deformed, or it is not good looking, it's not appealing, so be it. Once it is made, it remains. Now, taking forward the example of water, you put water in jug today, it takes the shape of jug. If you put water in that same jug after 10 years, it would still take the shape of same jug. So that is what is happening. The clay is the mind of our children. So between 1 year to 8 years, that's the age that we call it formative years. In that, once that vessel is shaped based on certain perceptions, certain thought process, then whatever you put in that vessel today, 10 years, 20 years, 40 years later, it will always take the same shape, unless until you break that mold and you create a new mold. So it is quite likely that for some children who take things, who are very emotional, and they get attached to what is happening around them, they might carry forward this impact throughout their life. So, Coral ma'am, that's Yeah, so it is all about the mindset of the children. It is a very good concept. बहुत अच्छा concept है कि बच्चों का जो mindset है initially हमें वो बहुत अच्छे से develop होना चाहिए, tension free होना चाहिए. No doubt, I am very excited to know more about this concept of mindset, sir. And I'm sure our audience are also willing to know more about this concept of mindset. कि how this mindset of the child is created, and how this pandemic is giving an adverse effect on the mind of the child. So we really want to know more about it, like what is it actually, how it has to be done. absolutely, ma'am. And it's very important to understand at this point of time as well. Right. Let's take a case of the current scenario that is going on. So, if ma'am, if I ask you, what do you think are generally things going on in a general household related to pandemic? So, even the audience, you can go to the chat box and type in whatever you feel like. What are the things
that are going on, that you see going on in your household, which are different from the normal routine life? If you can just share with me, the audience, as well as ma'am, if you would like to share, what is it that you see which is happening different in our household? So if anyone has any example, they want to share their life example, anything that is going beyond a different kind of things happening in their life other than their usual life, they can reply, they can write in the chat box. Like for example, one new thing that has happened is the online education. So we never had this concept before, the last lockdown, that children will be sitting at home and learning their lessons online through a laptop or through a mobile. This is something really very very new. The work from home itself is a new concept that has emerged as an outcome of this pandemic. A lot of talk is happening about the deaths and the number of cases, and through morning till evening, if you see the news media channels are just flashing now, so many इतने नंबर यहाँ बढ़ गए, महाराष्ट्र में इतने इन्फेक्शंस आ गए, इतने लोगों की डेथ हो गई, इतने अभी इकोनॉमी एकदम सत्यानाश हो गई, and all kind of that fear psychosis is being created. Of course, that's their job, because they survive on that. They get more TRP when they create this kind of an environment. So that's a job. But the fact is that unintentionally or intentionally or unknowingly, in the household, this kind of a talk is creating a lot of stress and fear amongst people. So even though people are not suffering from it, but they are always under a stress. What will happen to me? Is it going to happen to me? What happens if I catch? What will happen to my family if I suffer from corona? Where will I get the bed from? Where will I get the oxygen from? Some people are hoarding stuff, and some people are just keeping the medicines. So it is creating a lot of commotion in our normal household life. Now all this is being watched by these young children. Now, how do they create this mindset? Like the question that you asked, wonderful question. How do they create mindset? So, I would like to share here that there are three things by which a child creates his or her mindset. The first one is thoughts. So, what are the thoughts that are going on in the family in the current scenario? What is it that the family is thinking? What is it that the mother is thinking about? What is it that the grandparents are thinking about? What is going on? The thoughts that are continuously going on in the minds of the parents and grandparents and other relatives. Now these thoughts, they get converted into feelings. So whatever thoughts we are carrying in our head, they become our feelings, and each one of us carry those feelings with us. So we are carrying our feelings everywhere. Like for example, when a child, even before a child is born, he absorbs the feelings of the mother even in the womb. So if the mother at some point of time is having very good thoughts, very positive thoughts, the child will absorb the feelings created out of those positive thoughts. And on the So sir, contrary, if sorry. yes, ma'am. या सो सर बेसिकली जो एनवायरनमेंट है जो पेरेंट्स क्रिएट करते हैं घर पे या न्यूज Yes. से जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, बच्चा ही कैन नॉट गो आउट, वो बाहर जा नहीं सकता है, वो घर पे ही रहता है, एंड ही इज ऑब्जर्विंग व्हाट इज हैपनिंग, क्या उसके आसपास की सराउंडिंग है, रिलेटिव्स में माइट बी हियरिंग सम न्यूज. सो यू आर ट्राइंग टू बेसिकली से कि दीज actually gives the adverse effect on child's mind. ये इफेक्ट करता है, बच्चा बोलता नहीं है. As a parent, as a guider, we need to find out. हमें फाइंड करना है, पता लगाना है कि कैसे होता है, राइट सर? एब्सोल्युटली मैम, और उससे पहले हमें खुद को पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है. अब हो सकता है कि मेरे घर में मेरे फादर हैं जिनके पास सुबह से शाम तक कोई काम नहीं है. नो, ही इज अ सीनियर सिटीजन. तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी एंगेजमेंट है कि न्यूज सुनते रहते हैं. चलो न्यूज लगा लिया, फिर दूसरा चैनल लगा लिया, फिर तीसरा चैनल लगा लिया. लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि अनइंटेंशनली वो न्यूज जो है वो हमारे बच्चे के कानों में भी जा रही है, और कभी कभी वो फ्लैशिंग जो ब्रेकिंग न्यूज है उसको देखता है. तो ये चीजें जो है, जो हम डायरेक्टली उसको एक्सपोज नहीं कर रहे हैं,
लेकिन अनइंटेंशनली वो हो जा रहा है। और ये जो थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, लेट अस से वो न्यूज एक देखी, बहुत खतरनाक सी न्यूज देखी, हाँ, इतनी लाशें पाई गई ग्रैंड पेरेंट्स ने, और उसकी वजह से उनके थॉट्स जो हैं वो फियर के हो गए। उनकी जो फीलिंग है वो फियर की उनके अंदर क्रिएट हो गई। अरे इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोगों को ये हो रहा है, मेरे को ना हो जाए, क्या होगा, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, देखो ये हो गया, देखो वो हो गया। तो वो अपने अंदर एक फियर की फीलिंग क्रिएट करती है। अब ये जो फीलिंग है ये ट्रांसफर हो रही है बच्चे में। तो वो मैं एग्जांपल दे रहा था कि कैसे एक माँ जो है वो जब एक बच्चे को जन्म देने से पहले ही उसकी जो फीलिंग्स हैं वो बच्चे के साथ, बच्चा जो है उसको एब्जॉर्ब करने लगता है अपने अंदर। इसीलिए जो हमारे पुराने समय में ये सब बातें कही जाती थी, जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो कहती थी कि जब व्हेन व्हेन अ लेडी इज कैरिंग, व्हेन शी इज प्रेग्नेंट, तो घर में एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, पूजा पाठ का एनवायरनमेंट होना चाहिए, अच्छी अच्छी पिक्चर्स होनी चाहिए घर के अंदर, और जो लेडी है उसको अच्छे थॉट्स जो हैं वो सोचने, उनके विचार बड़े पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। लेकिन क्या आज के ज़माने में जहाँ पे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, न्यूज़ चैनल्स हैं, क्या इस समय वो उन विचारों को पॉजिटिव रख पाना पॉसिबल है? एक एग्जाम्पल आप और लीजिए, जैसे एक कोई बच्चा है 1 महीने का, किसी के घर में एक बेबी बॉर्न हुआ, न्यू बॉर्न, तो फ्रेंड्स आए या रिलेटिव्स आए, तो एक किसी के हाथ में हमने बच्चे को पकड़ा दिया, वो जस्ट बच्चे को पकड़ेंगे ले करके, फिर वो दूसरे लेडी को पकड़ाएंगे, और बच्चा इस दौरान में रो रहा है, फिर वो तीसरी लेडी के पास चला गया, वो फिर रो रहा है, फिर अंकल के पास चला गया, वो फिर रो रहा है, फिर उनको बोलते हैं अरे इसको बहुत रो रहा है, इसको माँ को दे दो। तो वो जैसे ही बच्चा अपनी माँ की गोद में जाता है एकदम शांत हो जाता है, एकदम चुप हो जाता है। उसको कैसे ये पता चलता है कि ये गोद जो है ये मेरी माँ की गोद है? वो तो पहचान नहीं सकता, 1 महीने का बच्चा है, तो उसको कहाँ से पता चलता है? वो उन फीलिंग्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपनी माँ की फीलिंग्स को। क्यों? क्योंकि इन फीलिंग्स के साथ वो रहा है 9 महीने, उसका एक नाता है इन फीलिंग्स के साथ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बच्चा बड़ा 6 महीने का हो गया, और एट दैट स्टेज अगर मदर के थॉट्स नेगेटिव हैं, डिप्रेशन वाले विचार आ रहे हैं, तो जो उसकी फीलिंग्स क्रिएट हो रही है वो भी वो बच्चा एब्जॉर्ब करता है। तो घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है हस्बैंड वाइफ में, या मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ में, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या डिस्कशन हो रही है, किस बारे में बात कर रहे हैं, क्यों झगड़ा कर रहे हैं, कुछ नहीं पता चलता। लेकिन वो उन लोगों की फीलिंग्स को एब्जॉर्ब करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, और वो जो एनवायरनमेंट उस समय बन रहा होता है वो उसके माइंड के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। सो दैट इज अबाउट थॉट्स। जो थॉट्स हैं वो हमारी फीलिंग्स को जन्म देते हैं, और फीलिंग्स हम अपने साथ लेके घूमते हैं, हम हर जगह अपनी फीलिंग्स अपने साथ लेके घूमते हैं। तो अगर मेरी फीलिंग्स पॉजिटिव हैं तो मेरे सामने वाले को तुरंत पता चलता है कि आज आपके चेहरे से पता चल रहा है कि आज आज का दिन आपका बहुत अच्छा जा रहा है। या कभी ऐसे मूड ऑफ है तो जैसे ही स्कूल में एंटर किए तो साथ वाले कोलीग साथ में ही देख रहे क्या हो गया, एवरीथिंग फाइन, आप यू आर नॉट लुकिंग वेरी जैसे आप नॉर्मल होते हैं, आज कुछ थोड़ा सा अलग लग रहा है, तबीयत ठीक है। उनको चेहरे से पता, आंखों से पता चल जाता है कि वो हमारी फीलिंग्स हैं जो हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। दूसरी चीज जो है जिससे कि हम अपने बच्चे का माइंडसेट क्रिएट करते हैं वो है हमारे वर्ड्स। वर्ड्स जो हम बोलते हैं। सो मदर क्या बोल रही है, फादर क्या बोल रहा है, ग्रैंड पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, वो जो वर्ड्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फॉर एग्जाम्पल, घर में लेट अस से कोई कोई बिजनेस फैमिली है, और लॉकडाउन की वजह से उनका स्टोर या उनकी शॉप या उनका जो भी बिजनेस है वो अच्छा नहीं कर रहा है, और ये बहुत आम सी चीज है, आज इस समय ये हो रहा है। अ लॉट ऑफ बिजनेसेस आर नॉट डूइंग वेल, पर्टिकुलरली रेस्टोरेंट्स और ट्रैवल बिजनेस, तो ये सारे ऑलमोस्ट बंद पड़े हुए हैं। तो घर में लेटेस्ट से ऐसी बातचीत हो रही है, अरे बिजनेस का तो अभी बिल्कुल बुरा हाल है, पता नहीं क्या होगा, कितनी देर तक ऐसा चलेगा, ऐसी इनकम नहीं आएगी तो बुरी हालत हो जाएगी, लोन कैसे चुकाएंगे। नो, ऑल दिस कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन, नॉट नोइंग दैट द चाइल्ड हु इज 2 years 3 years, उसको ये शायद नहीं पता है कि ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो जो ये डिस्ट्रेस की फीलिंग है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की जो फीलिंग है, वो उसको समझ रहा है और उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसके माइंड में ये रिकॉर्ड हो रही है कि अगर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो जाए तो क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं।
हम लोन नहीं दे पाएंगे, हमारा घर बिक जाएगा, गाड़ी बेचने की नौबत आ जाएगी। तो एक वो जो फियर और डाउट की जो फीलिंग हम क्रिएट करते हैं इन वर्ड्स के साथ, वो उनको भी, हालांकि वर्ड्स को भले ही ना वो समझे, लेकिन फीलिंग्स को वो कैप्चर करता है और अपने माइंड में रिकॉर्ड करता है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, वर्ड्स तो वो है, एक एक तो वर्ड्स वो है जो हम बोलते हैं नॉर्मली अपने नॉर्मल रूटीन में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। देयर आर अनदर टाइप ऑफ वर्ड्स जिसको हम कहते हैं सेल्फ टॉक, जो वर्ड्स कंटिन्यूअसली हमारे माइंड में चलते रहते हैं ना। अगर मदर के माइंड में, फादर के माइंड में कुछ नेगेटिव वर्ड्स चल रहे हैं रिलेटेड टू कोरोना और रिलेटेड टू बिजनेस और रिलेटेड टू करियर, तो वो नेगेटिव जो वर्ड्स हैं, दे ऑल्सो क्रिएट फीलिंग्स। तो इफ दोज सेल्फ टॉक इज नेगेटिव, then a negative feeling is created, and same way the negative feeling is being absorbed by the child as well. At the same time, if the words that we are speaking to ourselves, they are positive, then the child knows that something positive is going on. Third thing that is very very important are which help in creating the mindset of a child are the images. The images that we see right from the word when we wake up and till the time we sleep. What are the images that we are watching? हम सुबह उठते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, किस टाइप की न्यूज़ आ रहे हैं उसके अंदर? रेप, डेकॉइटी, डेथ, मर्डर, political news, all these things are going on in the newspaper. So when we are seeing all those pictures, when we are reading all those things, the thoughts that we create, are they positive or they're negative? Then we watch all these the serials. Let's say during the day we are watching a serial. What is shown in all these serials? ये हमारे जितने भी serials आते हैं, सास बहू साजिश सीरियल जो है, मेरा पति सिर्फ मेरा है, या मैं तुझे देख लूंगी टाइप के नाम जो हैं, तो इन सीरियल्स में ज्यादातर क्या दिखाया जाता है आजकल? ज्यादातर सीरियल में आप देखिए साजिश हो रही है, भाई की भाई के अगेंस्ट साजिश, बहन की भाई के अगेंस्ट, सास की बहू के अगेंस्ट, बहू की सास के अगेंस्ट। दे आर ऑल क्रिएटिंग अ नेगेटिव एनवायरनमेंट। तो यहां से शुरू होती है रिलेशनशिप्स के प्रति नेगेटिविटी। तो जब एक बच्चा, वो उसको सीरियल नहीं समझ आ रहा है, मैं फिर ये बार बार कह रहा हूं, हो सकता है उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सीरियल में क्या हो रहा है, सास कौन है, बहू कौन है, वो क्यों झगड़ा कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट द फीलिंग्स दैट गेट क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दैट सीरियल, the child is able to absorb those feelings. तो रिलेशनशिप्स के प्रति इमेजिन कीजिए कोई 6 महीने की या 1 साल की या 2 साल की बच्ची लगातार अपनी मदर के साथ या ग्रैंड मदर के साथ बैठ करके एक सीरियल देख रही है, जहां पर ज्यादातर सास को एक नेगेटिव रोल में दिखाया गया है कि वो सास जो है वो हमेशा बहू के अगेंस्ट साजिश करती रहती है, उसको भगाने की साजिश करती रहती है, उसको मारने की साजिश करती रहती है। तो क्या माइंडसेट क्रिएट कर रही है वो बच्ची इन रिलेशन टू द मदर इन लॉ? So the mindset, that the thought that is going on in the child is that mother-in-laws are not bad. या रिश्तों में, रिलेशनशिप में साजिश करना इज नॉर्मल। हमारे घर में 4 सीरियल चलते, चारों सीरियल में साजिश चल रही है, तो इट इज नॉर्मल, इट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं अपने रिश्ते, तो यही माइंडसेट क्रिएट हो जाएगा। अब वो देखिए जग क्रिएट हो रहा है, वो टम्बलर क्रिएट हो रहा है, वो पॉट क्रिएट हो रहा है। ये 4 जो मैंने वेसल्स आपको बताए वो क्या हैं? सबसे पहला है हेल्थ। एक वेसल बनाया हमने हेल्थ का। अब वो वेसल कितना स्ट्रांग है, कितना खूबसूरत है, क्या उसके अंदर जो हम पानी डालते हैं वो उसमें स्टे बैक करता है या नहीं करता है, या लीक कर जाता है? दूसरा हमने बनाया एक जग जो है हमारे रिलेशनशिप्स का। तीसरा है हमारा वेल्थ का, मनी रिलेटेड। What are my thoughts? What are my beliefs? What are my mindset about money? चौथा सबसे इंपॉर्टेंट इज सेल्फ इमेज। What a child thinks about himself or herself. ये सेल्फ इमेज वाले जो थॉट्स हैं या जो फीलिंग्स हैं वो किस टाइप की हैं? आर दे द थॉट्स दैट आई एम कॉम्पिटेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ, I can fail, but I am capable of getting out of my failure mode and bounce back. These are all इस positive. टाइप के थॉट्स हैं या इस टाइप के थॉट्स हैं?
पता नहीं, मैं तो जो भी काम करने जाता हूँ यार खराब ही हो जाता है, आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑन स्टेज, मैंने आज तक कभी स्टेज पे गया नहीं हूँ, मुझे तो डर ही लगता है भैया, मेरे को तो इससे दूरी रखो, या आई एम नॉट गुड एट टॉकिंग टू पीपल. A lot of people who are in the job market these days, they very proudly say, marketing is not my cup of tea. Now where has that mindset come from? Now if you are doing a job with a mindset that marketing is not my cup of tea, nothing succeeds in today's world without marketing. In some form or the other, you have to learn marketing. So these are the four vessels which are created right in the formative years by three means: thoughts, words, and images. So it is very important कि इस pandemic के time में हमारे घर में not only the conversations but even the thoughts which are going on in the minds of parents or other relatives staying in the family, the images that we are watching in news, बार बार देखने की जरूरत नहीं है. आज 282 हो गए, 380 हो गए, 490 हो गए. ये कोई क्रिकेट स्कोर थोड़ी चल रहा है कि आपको हर बॉल के बाद जानना है कि कितना चौका लग गया, ये छक्का लग गया. जब आपको एक बार पता चल गया, दिन में एक बार देख लीजिए, गुड इनफ. No need to continuously run this news from morning till evening. So it's And not a time. also, yeah, and also sir, मुझे लगता है feel कि जो parents हैं, they also have this mindset कि हमने तो अपने बच्चे को सब कुछ दे ही रखा है. They are in a proper good phase in their life. They hardly think that how the child is emotionally going. तो कई बार unintentionally, although parent doesn't want, लेकिन ये भी scenario है कि पेरेंट्स को ये लगता है although they are doing unintentionally all the things that are negative, but उनको भी ये चीज भी फील माइंड में रहता है कि we are giving everything to our child, तो हमारे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता है. He cannot Exactly. emotionally he cannot go that distress and all that. So this could also be one of the reasons. Yeah, I and think. whatever you are giving, most important is what is the feeling behind that giving. Let's say you are giving an iPad to your child or an iPhone to your child. What is the feeling with which you are giving? That is very important. And when the child is using that gadget, by using the gadget, what is the feeling, the thoughts, and that images that the child is creating out of that gadget? Now 90% people will tell me, when I do counselings for families, 90% people tell me that the gadgets are not being used positively. They are only being used for either entertainment or creating negative images and negative thoughts. तो ऐसे गैजेट का हमें क्या फायदा है? लेकिन एट द सेम टाइम यू कांट गेट रिड ऑफ द गैजेट्स, बिकॉज जैसे हम अभी बात किया कि ऑनलाइन एजुकेशन हो गई, वहां तो आपको मोबाइल चाहिए, आपको लैपटॉप चाहिए. ऑल दीज थिंग्स हैव बिकम नेसेसिटी इन टुडेज टाइम. सो There देयरफॉर is one child, Shivam Verma. He is saying that since 1 year he hasn't gone outside to play, and nobody is there who can play with him. He is feeling so alone at home, and very lonely he is feeling. And he says he thought that he is alone and no one is with him to play. So here the children are sharing their feeling कि उनको कितना feel होता है to be lonely at home. Since they are at home, they are not going anywhere. So this absolutely, is absolutely. one of the thing that the children are coming up with their queries. Very, very, So very, very true, Shivam. You are absolutely right, and I fully agree with you. My suggestion to you would be, find out some ways and means of engaging yourself. Uh, I can guess that maybe your parents are busy doing their thing. This work from home also has created a lot of pressure कि वो जो काम पहले वर्किंग आवर्स में हो जाता था, वो अब रात रात तक चलता रहता है. मीटिंग्स रात को हो रही हैं, 9 बजे भी हो रही हैं, 10 बजे भी हो रही हैं, 11 बजे भी हो रही हैं. तो वो भी एक इशू है. लेकिन शिवम के लिए मेरा एडवाइस यही होगा कि बेटे आप कोई ऐसा चीज़ ढूंढिए, ऐसा चीज़ पता कीजिए जिसमें आपको मज़ा आता है. सो ओके, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट इस समय बाहर जाना, खेलना जो है वो हमारे लिए सेफ नहीं है. तो इस टाइम में आप कुछ ऐसा ढूंढ सकते हैं. इफ़ यू लाइक टू डू सम पेंटिंग, इफ़ यू वांट टू लर्न सम म्यूजिक, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, म्यूजिक की भी चल रही हैं. These exercises are happening. Zumba is being taught online, Bhangra is being taught online, music is being taught. Neha Kekkar has started her own channel for online teaching of music. Shan has started. तो आप इस तरह के कोई एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आपकी कोई हॉबी डेवलप हो, ताकि दो फायदे होंगे. एक तो आप एंगेज हो जाएंगे,
और दूसरा ये है कि बातों बातों में टाइम भी नहीं पता चलेगा एंड यू वुड हैव डेवलप्ड अ टैलेंट विद इन योरसेल्फ. तो ऑलवेज फाइंड समथिंग in which you can engage. So, sir, So, parents' action. Yes, sir. Sir, please. is there any other question, ma'am, you want to take? Sir, yes, effects of parents' actions and behavior. We have understood, but they have a direct impact on children. So, we would Absolutely. like to know a bit more about this. What direct impact the children is having through their actions, through parents' action. Okay. So, as I said, ma'am, ये तो सभी सेमिनार्स में, पेरेंटिंग सेमिनार, पेरेंटिंग वर्कशॉप्स में हमको बताया जाता है कि चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स की रिफ्लेक्शन है. तो बच्चे वही वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे पेरेंट्स बिहेव करते हैं. लेकिन तो इसके ऊपर और एम्फेसाइज करने की कुछ आवश्यकता नहीं है. इट्स एब्सोल्युटली ट्रू एंड आई एग्री विद इट. बट समझना ये जरूरी है यहाँ पे कि ऐसा क्यों होता है. जब हमें ये पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है, तो फिर हमें अपने आप को सही करना, अपने आप को ठीक करना इजी हो जाएगा. और ये समझना इजी हो जाएगा कि ऐसे कौन से मेरे एक्शंस हैं जिसकी वजह से जो बच्चा है, मेरे बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ रहा है. तो जैसा मैंने आपको कहा, 3 चीजें हैं. आपका कोई भी एक्शन, whatever you are doing in your day-to-day work, when you are talking to the child or you are not talking to the child, generally एक ये perception होता है कि only the thing which I talk to my child is having an impact on the child, but that's not true. तो जैसा कि मैंने अभी explain किया, even when you are watching a television, even when you are seeing a WhatsApp message on your WhatsApp group, और वो WhatsApp message देखने के बाद सडन आपके अंदर एक thought trigger हुआ. If that thought is a negative thought, you end up transferring that feeling to your child as well, provided you are carrying that thought continuously with you. अगर आपने मैसेज देखा, पढ़ा, और ठीक है चलो छोड़ो जाने दो, लेकिन आपने कोई मैसेज पढ़ा और उसके बाद जिस आदमी ने मैसेज भेजा है आपको उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, आपको उसके ऊपर इरिटेशन हो रही है, आपको आपका मन कर रहा है कि मैं अभी फोन करके उसको 2-4 गालियां सुना दूं, और पूरा दिन आप इस फीलिंग को अपने साथ लेके घूम रहे हो. And even so that you're talking with your friends, even that you're talking with your spouse, देखिए इसने ये मैसेज डाल दिया, ये इसको क्या जरूरत है ये बोलने की, ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको कुछ समझ नहीं है, इसको क्या पता है. तो now what is happening when you are carrying that feeling with you, not knowing, अब इस समय आप बच्चे से बात नहीं कर रहे हो, लेकिन वो आपके घर के एनवायरनमेंट में वो जो एक फीलिंग है इरिटेशन की, फ्रस्ट्रेशन की, एंगर की, वो वाइब्रेशंस आपके घर में एग्जिस्ट करने लगती है. और उसी एनवायरनमेंट में आपका बच्चा भी है, तो वो बच्चा उन वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करता है और उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करना शुरू कर देता है. सो इट इज नॉट जस्ट व्हाट वी आर सेइंग टू द चाइल्ड or what we are the way we are acting with the child is important. It is also important how we are conducting ourselves during the day. So there is one, watching. there is one child, Sneha Kathuria, and she is saying that while seeing these corona cases in the newspaper everywhere, negative thoughts are often comes into her mind. So this is one of the queries she is having कि negative minds बहुत आते हैं mind में after hearing corona cases and all. So how to avoid, maybe she wants to know. Absolutely Sneha, you are spot on. ये बहुत स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है कि जब आप इस तरह के न्यूज़ देखेंगे या इस तरह के मैसेजेस पढ़ेंगे व्हाट्सएप पे या फेसबुक के ऊपर, तो इस तरह की फीलिंग्स आना बहुत नेचुरल है. इसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. एंड अगर आपको ऐसा तो आप ये देखिए कि कौन सी ऐसी चीज से आपको, जिससे आपको ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसको कट डाउन कर दीजिए, उसको शट डाउन कर दीजिए. जैसे मैंने कहा, आपको जरूरत नहीं है न्यूज रोज रोज पढ़ने की. अब हमें पता चल गया कि हैंड वॉश करने हैं, सैनिटाइज करने हैं, डिस्टेंस 2 गज की दूरी बना के रखनी है, मास्क लगा के रखना है, इतना तो हमें सबने और वैक्सीनेशन कराना है, सबको पता है. अब बार बार उन वैसे मैसेजेस पढ़ पढ़ के अपने अंदर एक नेगेटिव फीलिंग क्रिएट करना, एक फियर क्रिएट करना, ये इनफैक्ट ये हमारी खुद की इम्यूनिटी के लिए अच्छा नहीं है. बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते कि जब हम फियर की फीलिंग क्रिएट करते हैं अपने अंदर, तो एक्चुअली आवर इम्यूनिटी गोज डाउन.
So it's not good to have these kind of thoughts with us. Just take an example. कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि कभी आप रास्ते में जा रहे हैं और कुत्ता आपके पीछे पड़ गया, आप भाग रहे हैं कुत्ते के आगे, आप भाग रहे हैं कुत्ता और आपके पीछे भाग रहा है, तो कभी आपने ये सोचा है कि आपके पेरेंट्स जनरली ऐसी सिचुएशन में आपको क्या सजेस्ट करते हैं? व्हाट डू दे सजेस्ट? दे सजेस्ट दैट जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, फेस करो कुत्ते की तरफ, एंड आप ये ऑब्जर्व कीजिए, ऐसा करके आपको क्या पता समझ में आएगा, वो कुत्ता रुकेगा, आपके पीछे भागना बंद कर देगा, टर्न अराउंड करेगा और चला जाएगा। तो ऐसी टेक्निक्स जो हैं, जो हंटर्स हैं वो भी यूज करते हैं, वो शेर की आंखों में आंखें डाल करके देख लेते हैं और शेर जो है वो रुक जाता है। तो जिस चीज से आप ज्यादा डरते हैं ना, वो चीज आपको ज्यादा डराती है। तो अगर आप कोरोना से बहुत डरेंगे तो कोरोना आपको बहुत डराएगा। तो जिस चीज से हमें डर लग रहा है, उसको फेस करने का बेस्ट तरीका है उसके सामने खड़े हो जाओ, आंखों में आंखें डाल करके देखो। आई एम नॉट सेइंग कि आप, अब कई लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, अरे मैं तो नहीं डरता कोरोना से, मैं तो मास्क नहीं पहनूंगा। सो दैट्स नॉट करेक्ट, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। हमें केयरफुल रहना है, केयरफुल रहना जरूरी है, लेकिन फियरफुल रोना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। सो बी केयरफुल बट नॉट फियरफुल। जी मैम, आई थिंक So there is another question by Pooja Shah. She says, "Hello sir, my daughter is 5 years old and she is single child. She always says I feel alone. No one is there to play with me. And this mother is a single mother. She is working single mother and she is worried about her mental health and emotional health as well." Absolutely. I mean, it reflects from your question itself that you are worried, and this is a situation which needs very very careful handling. बच्चा अकेला है घर में तो ऑब्वियसली एक लोनलीनेस की फीलिंग आती है। तो हम इसको बड़े ध्यान से समझ करके कुछ ऐसी चीजें हम क्रिएट कर सकते हैं बच्चे के साथ। आजकल वी कैन आल्सो यूज टेक्नोलॉजी इवन फॉर द गुड, इन अ गुड सेंस। तो हम टेक्नोलॉजी के यूज करके ऐसे आजकल एप्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप अपने बच्चे को मॉनिटर कर सकते हैं। यू कैन बी, ऑल्दो यू आर वर्किंग वुमन, यू आर गोइंग आउट, but still you can be in touch with your child using those, even if you don't want to give a mobile to your child, but still you can use those handy cams and you can be in touch with your child. You can know what she's doing, and maybe get some engagements like music academy or a play academy or something like that, which is around your home, where you can engage for some time. And once, my humble request to you is, once you are home, leave your work at workplace. Once you are home, give your entire 100% time to daughter, because that's one time that she cannot afford to lose you in that time. So that is one time that you should be giving your 100% to the daughter. I hope that help, Pooja ji. Right. So, ma'am, are we through with the questions? We were talking about how is parents' behavior affects children's mindset during the pandemic. So it's very very important कि हम बच्चों को, इंस्टेड ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, हमें सबसे पहले वो खुद अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा। तो अगर आज हम कंटिन्यूसली न्यूज़ देख रहे हैं और अगर बच्चे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बताइए कि दादाजी ये अच्छा नहीं है, ज़्यादा न्यूज़ मत देखिए, सिर्फ एक बार दिन में देखिए, दैट इज़ गुड एनफ। सुबह से शाम तक बार बार अगर आप ये देखेंगे तो इससे आपके अंदर एक फियर साइकोसिस क्रिएट होगा, एक डर की फीलिंग क्रिएट होगी, और वो अच्छी चीज़ नहीं है। अपने पेरेंट्स को भी बोलिए कि आप ये ना लगाएं, न्यूज़ जो है ज़्यादा ना सुने, एक बार दिन में सुन लीजिए, काफ़ी है। और अगर आपको एंड इफ योर पेरेंट्स, प्लीज़ ensure that you are not exposing your children too much to the news of pandemic, and if they are exposed through WhatsApp groups or through Facebook, make sure to guide them, to advise them to stay away from this, and you also stay away from this. रिड्यूस, एक पुराने जमाने में एक बात हुआ करती थी मैम,
मुझे याद है मेरी दादी कहा करती थी कि जब हम छोटे बच्चे थे तो उस समय कुछ बीमारियां थी, जैसे कैंसर को बहुत लाइलाज बीमारी समझा जाता था, तो कैंसर का नाम लेना घर में ही वर्जित होता था, तो उसको बड़े डिफरेंट तरीके से वो वाली बीमारी बोला जाता था, नाम नहीं लिया जाता था। लेकिन आज देखिए हम घर घर में गाने गा रहे हैं कोरोना के। तो इस चीज को जितना अवॉइड कर सके उतना अच्छा है। लेट लेट आर द एनवायरनमेंट इन आवर होम शुड बी as positive as we can make. as possible. Right. So, parents, if you have any queries, our audience, कोई भी query है, we have one query with us, Khushbu Nayak. She's saying, "Hello, sir. My child is very interested with watching mobile and TV shows. How he will leave this habit?" हाँ, सो मैम देखिए ये दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग। इनफैक्ट आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू एम्स about 6 months ago they started a de-addiction center, the digital de-addiction center। इतना ज़्यादा ये बीमारी बढ़ चुकी है कि इसको अब एडिक्शन की कैटेगरी में आ गई है, जैसे हम ड्रग एडिक्शन या लिकर एडिक्शन हुआ करती थी। सो नाउ दिस हैज कम इनटू दैट कैटेगरी एंड नाउ एम्स जैसे इंस्टीट्यूट ने एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर खोला, उनके जो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है, एंड बिलीव मी वहाँ पे लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, इतना ज़्यादा रश है उस सेंटर के अंदर। तो बचपन से ही और हम ये खुद देखते हैं कि ये शुरू कहाँ से होता है। लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट कि ये सब चीज़ शुरू कहाँ से हुई। जब बच्चा छोटा, मैं देखता हूँ कई बार हम जाते हैं, जैसे डॉक्टर के पास गए, आप क्यू में बैठे हैं, तो बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो लगा हुआ है गेम खेलने के लिए। छोटा सा बच्चा, 1-2 साल के बच्चे, वो मोबाइल के ऊपर गेम खेल रहे। तो सबसे पहले पकड़ाया तो हमने ही है ना उसके हाथ में वो चीज़। तो अब उसको कैसे हैंडल करना है ये भी हमें देखना पड़ेगा। अब एक साथ करेंगे तो रिवॉल्ट होगा। तो बेस्ट थिंग इज धीरे 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 समझा करके, एक टाइम फिक्स करके, एक डिसिप्लिन क्रिएट करके, नॉट ओनली फॉर द चाइल्ड, दैट शुड बी फॉर एवरीबॉडी। ये नहीं है कि हम बच्चे को करें मोबाइल मत पकड़ो, लेकिन खुद हाथ में मोबाइल देख रहे हैं साथ में, अरे देखो बेटे मोबाइल मत खेलो, मोबाइल मत देखो। अब उसको क्या पता कि आप ऑफिस का काम कर रहे हो मोबाइल के ऊपर, उसको नहीं पता। वो तो ये कह मम्मी आपने भी तो मोबाइल पकड़ा हुआ है, मेरे को बोल रहा है मत खेलो मोबाइल पे। सो द थिंग इज कि पहले जैसे मैंने कहा कि हम क्या एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं टू द चाइल्ड, दैट इज गेटिंग रिकॉर्डेड इन हिज माइंड, इन हिज ब्रेन। तो ये जो एनर्जीज वो एब्जॉर्ब कर रहा है थ्रू आवर थॉट्स, थ्रू आवर वर्ड्स एंड थ्रू द इमेजेस दैट वी आर शोइंग टू द चाइल्ड, वो क्या देख रहा है, वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये जो हम उसको दे रहे हैं, इसकी वजह से उसके माइंड के अंदर स्पेसिफिक थॉट पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। ये थॉट पैटर्न्स क्या है? ये वही है जो मैंने आपको बताया, एक जग, एक जार और एक मटका, वो धीरे धीरे क्रिएट हो रहे हैं। वंस दोस थॉट पैटर्न्स आर क्रिएटेड अबाउट व्हाट, अबाउट हेल्थ, अबाउट मनी, अबाउट रिलेशनशिप्स एंड अबाउट सेल्फ इमेज, तो ये जो 4 बर्तन हम बना रहे हैं, कंटिन्यूसली हम बना रहे हैं, तो ये जो बर्तन जो बनते जाएंगे, ये पूरी उम्र उसके पास रहेंगे, और आगे चल करके वो जितने भी डिसीजंस होंगे, जितनी भी उसकी चॉइसेस होंगी अपनी लाइफ में, दे विल बी ड्रिवन फ्रॉम दीज थॉट पैटर्न्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट in fact during the pregnancy also, but right from the birth of a child, the creation of the mindset starts. So let's try and do an exercise to understand this. एक छोटी सी exercise करते हैं, and I just want to understand, all of you want to do this exercise with me. Please type on the chat box if you are interested, if you're really excited to do an exercise to understand the creation of mindset with me. If yes, type yes in the chat box. Go ahead. And मैं कुरल मैम, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप भी मेरे साथ ही एक्सरसाइज कीजिए। तो सो उसके पहले हम क्या करेंगे, हम बिफोर वी स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज, इस मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, और जैसे जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ उनको वैसे वैसे फॉलो करना है, राइट। सो पहले हम क्या करेंगे, अपने हाथों को मेजर करेंगे। पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारे जो हैंड्स हैं, क्या हमारे जो हैंड, वो दोनों बराबर हैं या नहीं बराबर, ओके। सो ये कैसे करना है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू। यहाँ पे देखिए हमारे हाथ में यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे, राइट। इसी तरह से हमारी दूसरी हथेली के यहाँ पे एक दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब कई लोगों के ये हॉरिजॉन्टल लाइंस 3-3, 4-4 होंगी, ज्यादा है 3-3, 4-4,
डजेंट मैटर, आप कोई एक पकड़ लीजिए या जो सबसे प्रोमिनेंट वाली है उसको पकड़ लीजिए, लेकिन ध्यान रखना है कि कौन सी लाइन आपने चूज की है। अब आपने क्या करना है, देखिए जो इस साइड की लाइन है और जो इस साइड की लाइन है, इन दोनों को आपस में ऐसे मिलाना है। मी कम क्लोज टू माय कैमरा सो Yes. दैट आप सब ध्यान से इसको देख सकें। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों को आपस में ऐसे मिलाना है। और अब धीरे 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 अपने हाथों को नमस्ते पोजीशन में इस तरह से अपने फेस के सामने इस तरह से नमस्ते पोजीशन में लेके आना। देखिए बिल्कुल आपकी आंखों के सामने आपके हाथ है, ऐसे ही रखने, हाथ अभी छोड़िएगा नहीं। अब आपने क्या देखना है, क्या ऑब्जर्व करना है कि आपकी जो मिडल फिंगर है हाथ की, उसकी जो टिप है उसको आप ऑब्जर्व कीजिए कि दोनों लेफ्ट और राइट हाथ की मिडल फिंगर की जो टिप है वो दोनों बराबर हैं या छोटी बड़ी है। अगर बराबर है तो ठीक है, अगर छोटी बड़ी है तो ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सी फिंगर छोटी है, कौन सा हाथ आपका छोटा है, विच वन इज स्मॉल, लेफ्ट और राइट। ये ऑब्जर्व कर लीजिए, ये चेक कर लीजिए। ओके, ये कर लिया आपने, ठीक है ना। अब आप हाथ छोड़ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, आप अपने हाथ को इस तरह से अपने फेस के सामने रखें, फेस के सामने इस तरह से रखेंगे, इस तरह से फेस के सामने रखेंगे। और मैं एक कमांड बोलूंगा, वो कमांड आपने अपने हाथ को देनी है, लाउडली देनी है, बोल करके देनी है, आवाज आनी चाहिए, आपकी आवाज आपके कानों तक आनी चाहिए। सो वट एवर कमांड यू आर गिविंग, वो आपने इतने जोर से देनी है कि आपको अपनी आवाज सुन जाए, राइट। और कमांड जो देनी है वो मैं आपको बताऊंगा क्या कमांड देनी है, वो आपने मेरे साथ देनी है और थोड़ा सा कंसंट्रेट करके फोकस करके देनी है। तो अपने अपनी आंखों को, अपने हाथ को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने रखिए और अपनी आंखों को अपनी हथेली के ऊपर फोकस कीजिए, अपने हाथ के ऊपर अपने आंखों को फोकस कीजिए, बिल्कुल ध्यान हाथ के ऊपर। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए और मेरे साथ कमांड देंगे फोकस करते हुए, आंखों को फोकस रखिए और मेरे साथ कमांड देंगे। कमांड है ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर, दैट इज द कमांड। ओके, तो मेरे साथ सब लोग बोलेंगे जोर से, ग्रो लॉन्गर, Grow longer. Longer. ग्रो लॉन्गर, Grow 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 longer. ग्रो लॉन्गर। Grow longer. अब जैसे हमने पहले चेक किया था उसी तरह से सब लोग अपने हाथों को, वही लाइन देखिए जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे है, उसको आपस में मिलाइए और धीरे 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 अपने फेस के सामने अपने दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में बंद कीजिए जैसे हमने पहले किया था। और अब चेक कीजिए कि जिस हाथ को आपने कमांड दिया था उस हाथ को क्या हुआ। तो जिसका हाथ बड़ा हो गया वो टाइप कीजिए यस, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यस। अगर आपका हाथ बड़ा हो गया है तो टाइप कीजिए यस। इस तरह से धीरे धीरे नमस्ते पोजीशन में लेकर के आइए एंड लुक एट माय हैंड, यू ऑल कैन सी। Shubham Singh is saying yes. Mine Yes, has Shubham. become equal Yes. to. It was shorter, लेकिन It equal लग was रहा है. shorter, it has become equal. Awesome, Yeah. awesome, great. Yeah. Nina is मतलब also पहले से saying बड़ा हो yes. गया हाथ। Yes. Yes. Muskan Muskan is also is saying so yes. Great. Awesome. Samriti Smriti Roy is saying yes. Muskan. Great, grow great, great. longer. Awesome, awesome. Very nice. Very nice. तो आपका जो शुभम is also saying yes, yes. The Iron Gaming, yes, great. Yes. Sneha ji is saying yes, awesome, 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 great. So इस एक्सरसाइज से हमें क्या पता चला? So this is a simple exercise just to prove the impact of our words on our body, on our body. तो हमारी जो बॉडी है, ये हमारी बॉडी का पार्ट है, इसको हमने कमांड दिया और इसने वो कमांड एब्जॉर्ब किया और ओबे किया। तो इसी तरह से जो मैंने शुरू में बताया, हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स और हमारे इमेजेस, इनका क्या इम्पैक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर। Jyoti Singh is saying कि sir absolutely correct. Correct. थैंक यू ज्योति, थैंक यू सो मच। सो
हमने बोला ग्रो लॉन्गर, और हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है। तो अगर हम ये पॉजिटिव वर्ड्स बोल रहे हैं अपने आप को, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन अचीव माई टारगेट्स, आई एम गुड एट स्टडीज, आई एम हेल्पफुल टू पीपल, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई लव टू स्पीक, आई लव पब्लिक स्पीकिंग। अगर हम इस तरह के पॉजिटिव वर्ड्स बोल रहे हैं तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगी। एट द सेम टाइम अगर हम नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे हैं, कैसे? एग्जाम्पल देखें, चलिए एक बार फिर से एग्जाम्पल देखते हैं। वैसे ही अपने हाथ को पकड़िए जैसे पहले किया था। लेट्स सी एन एग्जाम्पल वंस अगेन। अब इस बार हम कमांड को रिवर्स कर देंगे, नेगेटिव कमांड देंगे। तो पहले हमने बोला ग्रो लॉन्गर, अब हम कमांड देंगे बैक टू नॉर्मल, जैसे पहले था वैसे हो जाओ। तो वैसे ही हाथ को अपने फेस के सामने रखिए, जैसे पहले रखा था वैसे ही फेस के सामने रखिए, और अपनी आंखों को फोकस कीजिए हाथ के ऊपर, अपने हथेली के ऊपर फोकस कीजिए। थैंक यू मैम। अपनी आंखों को बिल्कुल फोकस कीजिए अपने हाथ के ऊपर। एक लंबी गहरी सांस अंदर खींचिए, और जैसे पहले कमांड दी थी वैसे ही जोर से कमांड देनी है, ताकि आप अपने शब्दों को, अपने वर्ड्स को सुन सकें। मेरे साथ कमांड देंगे, बैक टू नॉर्मल, Back to normal. 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 बैक टू नॉर्मल। Back to normal. अभी जैसे हमने पहले चेक किया था वैसे ही एक बार फिर से ये वाली लाइन, इधर वाली लाइन, दोनों को आपस में मिलाएंगे। इस तरह से मिला करके धीरे धीरे अपने हाथों को नमस्ते पोजीशन में अपने फेस के सामने बंद कीजिए। और अब देखिए आपके हाथ को क्या हुआ। अगर आपका हाथ बैक टू नॉर्मल हो गया तो टाइप कीजिए BTN, बैक टू नॉर्मल, BTN। अगर वापस आ गया तो टाइप कीजिए BTN, बैक टू नॉर्मल। मुस्कान सिंह, True, थैंक यू sir. It मुस्कान। is so very true in my own case. I mean, really, it works. It works wonder. It means really, it is back to normal. पहले हमने पॉजिटिव कमांड दी ग्रो लॉन्गर, तो वो बढ़ा। जैसे मैंने कहा आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम बाउंड टू बिकम कॉन्फिडेंट। Yeah. लेकिन इफ आई एम टेलिंग माई सेल्फ एवरी डे, आई एम टेलिंग माई सेल्फ आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ टॉकिंग टू पीपल। इफ यू आर टेलिंग योर सेल्फ दिस, if you are telling this to yourself, you are creating a negative feeling about yourself, We are getting so and many comments, sir, from that the is viewers, from being the absorbed. audience, and they are So saying many you are people are repeating. saying Sneha is saying back to normal, Yeah. Shashi, Hardik, awesome. Angel also saying back to normal, great. Yeah. Awesome, awesome. Again, Thank you so much. Devyanshi is saying back to normal, great, great, awesome. Thank you so much. Thank you so much, Umesh, Viren. Thank you so much. Thank you, Hemant. Really great. Thank you so much for participating and showing all that enthusiasm. So really, you see, इसी तरह से अगर हम बच्चे के साथ पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अगर नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट है। हमारी बॉडी, फिजिकल बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। Sir, तो अगर आप actually, दिन, जी मैम, yeah, sir. Actually, it is a very practical exercise. You have shown that how our body reacts to our own views. It's very practical, and even I have appreciated this exercise. Yeah, when it is back to normal, it really was back to normal. So it really is very yeah. anybody So, can understand that. so ma'am, what it also proves is that it works both ways. पॉजिटिव भी काम करता है, नेगेटिव भी काम कर रहा है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है what words we are speaking, not only just to the child but to ourselves, with each other, husband with wife, wife with husband, with parents, what we are talking, what we are telling ourselves continuously, self talk, the images that we are seeing. So there are so many other exercises by which similar exercises by which
I also prove to you that how your images are impacting your energy level in your body, how your thoughts are impacting. So all these things, but today we have a very short time, and I think we are hitting the clock Yeah, to yeah. finish the time, and I'm also Well, getting an indication. yeah. So often actually often we are too close to our problems. हम लोग बहुत close होते हैं अपने problems के साथ to view them with the clarity. हम नहीं view कर पाते clarity से that someone else would. The other person very easily understand that. But now Yes. I'm sure that the parents, viewers, our audience, they have recognized and that they will change the way they respond to their family members, to their children's challenges. And thank you, sir, for your insight into this most important topic that has affected all of us. We have become more enlightened, more cautious, which is indeed the need of the hour. Now, today, we have also understood that these things have long term implications and how these things happen and how to overcome. We have learned that. Sir, on behalf of the entire Bal Bhavan family, thank you very much for edifying us in becoming more aware of the problems that the children are facing today, mentally, emotionally, and the ways we can help to solve them. At last, I would like to end this show by a famous quote written by Marcel Proust. It's not a matter of changing our landscape, but of changing our eyes. Thank you for changing the way we see. Thank you, Thank sir. you very much, ma'am. Thank you. My heartfelt gratitude to you, first of all, for conducting it so well and having such wonderful questions. And thank you to all the parents who attended this, all the children who attended. I hope it brought in some value. They got the value of their time which they spent with me and you listening to this talk show. And thank you to Bal Bhavan International School for giving me this opportunity to speak to all of you. And I'm so blessed that I am able to share my thoughts with all of you. Thank you to Dr. Shresht Kanpur, who brought me to in contact with Coral Ma'am and with Bal Bhavan, and facilitated today's talk. So thank you to the principal, Bal Bhavan International School, for gracefully accepting this request and conducting this. Thank you so much, Coral Ma'am, and thank you, Bal Bhavan International School. Thank you so Thank much. you, sir. Thank you. Thank you.